Yes, sir. I am Prince Haresbhai Kasania. I am from Rajkot, Gujarat. I completed my schooling from Rajkot itself. My mother is a homemaker. My father is a worker in one of the Rajkot's company. I have one younger brother. After my schooling, I completed my BTech in chemical engineering from Dhamsi Desai University in Nadia, in Gujarat. And then after I got placed in a company Aarti Industry Limited. So up from last 1.5 year, I am working as a process engineer in Aarti Industry Limited. Okay, great. So what is your exactly your job description at your current employer? Yes, sir. Actually, I'm a process design engineer in a plant. So whatever modification is happening in the plant, like I am responsible for MOCs, management of change. I am responsible for deviation that happen in the plant. मतलब जो भी सर प्लांट में डेविएशन हो रहे हैं वो डेविएशन को सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा, उसके लिए जो भी एमओसिस मैनेजमेंट ऑफ चेंज लेने पड़ेंगे, उसके लिए जो भी पीएनआईडी प्रिपेयर करना पड़ेगा, इंटरलॉक्स मैट्रिक्स प्रिपेयर करना हो गया, अलार्म प्रिपेयर करना हो गया, उसके लिए जो भी सेफ्टी के रिलेटेड एजॉब करना, IRA करना, RCA करना, वोटेप करना, पूरा डिटेलिंग जो प्रोसेस इंजीनियरिंग के स्कोप में आता है। फिर उसके लिए हीट एक्सचेंजर डिजाइन करना हो गया, पंप डिजाइन करना, पूरा मतलब वो मेरा जॉब रोल चलो बढ़िया. So why do you want to join HPCL, Prince? I mean, you are लाइक सर already working in a private, that too in your home state. You know, HPCL could throw you out in maybe, I don't know, Arunachal, Odisha, something like that. So why do you want to join HPCL? एक्चुअली सर मेरा मतलब एज अ केमिकल इंजीनियर मेरा ड्रीम था कि मैं एज अ कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी में जॉब करूं, ताकि मैं ऐसे मतलब बहुत सारी लर्निंग लर्निंग ले पाऊं और सीख पाऊं। जित जो अभी मेरे अभी जो स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, आरती इंडस्ट्री में, जो अभी उतना नहीं है लाइक कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी स्ट्रक्चर। HPCL का जो मिशन है वर्ल्ड क्लास एनर्जी कंपनी बनना, वो मिशन में मतलब मैं साथ देना चाहता हूँ, और कंपनी के ग्रोथ के लिए वो मेरे लिए भी अच्छा है और कंपनी के ग्रोथ के लिए भी सही है। Okay, see, and what if, you know, you are not put into refinery, but let's say some sales or procurement department? Yes, sir. I am okay with that. But as I mentioned, I have experience of 2 years of process engineer. So if I get in plant, then I get more to HPCL. Okay, great. Yeah. So overall, थोड़ा अपना जो आंसर है वो थोड़ा इम्प्रूव करो YHPCL का. It matters. ठीक है. जैसे Okay. given you are experienced, you can say कि uh, I have been closely looking at the whole chemical industry, and it excites me. And given HPCL has a lot of stuffs related to chemical, they have refineries, production, distribution, those kind of thing. So essentially, it excites me to join HPCL, and which is the reason I want to join in. थोड़ा तुम एक एनर्जी साइड भी बोल सकते हो कि बचपन से मेरे को एनर्जी साइड में वर्क करना था, एंड HPCL इज एनर्जी कंपनी, तो ये वो टाइप से. ठीक है. थोड़ा Okay, यू हैव sir. अ गुड ठीक है पॉइंट सर. दैट यू आर ऑलरेडी वर्किंग, सो यू कैन से कि हाँ, दिस इज द रीजन आई वांट टू जॉइन इन, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. Okay, यस. ओके. सो तुम्हें ठीक है. इंटरव्यू टेक्निकल चाहिए या यू वांट टू बी HR साइड में भी? बहुत सर मतलब टेक्निकल भी HR भी थोड़ा बहुत 50-50। ठीक है. सो प्रिंस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? सर माय स्ट्रेंथ इज आई सेल्फ मोटिवेशन पर्सन। मतलब मैं जो भी काम मुझे दिया जाता है वो पूरा डेडिकेटली करता हूँ और टाइम पीरियड में खत्म करने की कोशिश करता हूँ। अमेजिंग. एंड व्हाट आर योर और वीकनेसेस? मेरी वीकनेस, हाँ मेरी वीकनेस ये है कि मैं कोई भी काम में मेहनत करता हूँ और वो काम इनके सक्सेस नहीं हो पाता, थोड़ा डिमोटिवेट फील करता हूँ वो काम के लिए, कई इतनी मेहनत कर दी फिर भी ये काम जो होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, तो थोड़े दिन के लिए या थोड़े टाइम के लिए वो थोड़ा मैं डिमोटिवेट फील करता हूँ। So, given your experience as in RT industry, so how do you think you will help in, or you will fit in the role at HPCL? यस सर, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट आई एम करंट मतलब जो आरती इंडस्ट्रीज में जो पूरा नया प्लांट कमिशनिंग स्टेज में है, वो प्लांट में मैं काम कर रहा हूँ। वो पूरा यूएस की कंपनी है ड्यूपॉन्ट करके, उसका पूरा प्लांट है। तो उसमें जो मैंने कमिशनिंग पूरा एमसीसी राउंड जो होता है, मैकेनिकल क्लियरेंस राउंड, फिर पीएसएसआर राउंड जो प्री स्टार्टअप सेफ्टी राउंड होता है, उसके बाद से लेके अभी प्लांट मेरा फुल फेज में चल रहा है। तो पूरा मैंने एमसीसी राउंड से लेके प्लांट मेरा फुल फेज में चल रहा है, उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, जो भी ट्रबल शूटिंग होता है, वो सब चीजों का मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्शन और प्रोसेस दोनों चीज का एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं अभी HPCL में सिलेक्ट हो चुका हूँ, अगर हो पाया,
तो मैं मेरे एक्सपीरियंस की मदद से HPCL को हेल्प कर सकता हूँ और मेरे अपने आप की ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकता हूँ. That's amazing actually. So, Prince, let's say, mm, do you know what is thermos? We use it every day in our day-to-day activities. थर्मोस. Yes, thermos. थर्मोस ना सर? Mm-hmm. थर्मोस, हाँ, ओके. थर्मोस मीन्स मतलब अभी कोई गर्म पानी को या फिर गर्म चीज को गर्म मेंटेन करने के लिए या फिर ठंडी चीज को ठंडा, मतलब उस टेम्परेचर में कुछ टाइम के लिए, दोनों टेम्परेचर से ज्यादा टाइम के लिए मेंटेन करने के लिए वो चीज यूज होती है. Correct, थर्मोस की correct, बोतल आती है, ऐसा correct. सब. And what's the difference between a normal bottle and a thermos bottle? उसमें इंसुलेशन का लेयर होता है सर थर्मोस बोतल में, जो बाहर एटमोस्फेयर के साथ हीट ट्रांसफर नहीं होने, मतलब कम हीट ट्रांसफर होने देता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. Correct. Now, let's say you are an HPCL engineer and you have something like liquid nitrogen with you and you want to store it. So you want to maybe ओके. manufacture a thermos now. You want to design a thermos, ओके. big one. So, ओके. how will you approach this problem? लाइक मैं कैसे डिजाइन करूंगा वो आप पूछ रहे हो? Yes. How will you approach the problem? यस, तो हाँ, तो सबसे पहले लिक्विड नाइट्रोजन को स्टोर करने के लिए मुझे क्रायोजेनिक टैंक में उसको स्टोर करना पड़ेगा. तो उसके लिए मुझे उसको हाई प्रेशर पे स्टोर करना पड़ेगा. तो जो टैंक की डिजाइन होगी, थिकनेस होगी, वो मैं उस हिसाब से सिलेक्ट करूंगा. ठीक है, और ठीक है. वो I'm उसका not much, टेम्परेचर बहुत. I'm not concerned about structural side. I'm concerned about thermal side. ओके, तो मैं उसमें इंसुलेशन का लेयर प्रोवाइड करूंगा, मे बी एस्बेस्टोस Correct. And will you keep it single layer or या double layer? ग्लास How विल would? बी, ग्लास विल बी. Okay. So what exactly does यस this? सर, ये सिंगल लेयर. Correct. What exactly does this glass wool or, as you said, asbestos? If in our day-to-day home, we also observe sponge type of material. What does it exactly do? या ऐसे सर, डेटा आई मेंशन ना कि वो हीट ट्रांसफर नहीं होने देगा, हीट ट्रांसफर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कि एटमॉस्फेयर में जो हमारा टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे वो हीट ट्रांसफर कम हो पाएगा. So if it is not essentially there to तो reduce. थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी लो फॉर दैट मटेरियल. Well, हाँ, then why don't इफ we use आई से why टेक्निकल देन थर्मल. you know why don't we use vacuum instead? It has lowest possible thermal conductivity, like near zero. वैक्यूम सर, इंडस्ट्री स्केल पे आप वैक्यूम कर सकते हो ना, लेकिन एज अ मतलब डेली लाइफ में वो वैक्यूम की चीजें करना मे बी कॉस्टली हो जाएगा. You are handling liquid nitrogen, and if heat gets inside, the नहीं, pressure will लिक्विड increase. नाइट्रोजन के केस में तो मुझे प्रेशराइज ही रखना पड़ेगा. प्रेशराइज ही रखना पड़ेगा लिक्विड नाइट्रोजन के केस में. Correct? हाँ. Okay. What is second law of thermodynamics, Prince? Energy is always transfer from higher temperature to lower temperature. If you want to transfer from lower temperature to higher temperature, then we need to give external energy. Okay. And now, can you give me statement of second law in terms of entropy? Yeah, entropy of substance is zero. Absolute zero temperature is zero. I can say. Okay. Okay. At moment 0 Kelvin, entropy of substance is zero. Correct. Now, what is third law of thermodynamics? Then this entropy law is third law of thermodynamics. Yes. Now, I ask you second law of thermodynamics. What is second law of thermodynamics in terms of maybe entropy? Sorry, sir, that I don't know currently. I will read. Okay, fine. Okay. That's all right. So, Prince, tell me one thing. What are the modes of heat transfer, and what is the principle behind them? Conduction, convection. Correct. What is Yeah, principle behind conduction, them? convection, and radiation. Conduction Mhm. is based on the principle of Fourier law. Convection is based on the principle of Newton's law of cooling, and radiation No, it is not is based based on on the those principle of laws. Actually, those laws are defined Boltzmann. through something else. What I'm essentially asking is what is the working mechanism of those type of heat transfer? Why conduction takes place? Why convection takes place? And why radiation takes Uh, place? How actually? Why is not a correct answer. Why? How?
कंडक्शन सर, जो मेटल के बीच में जो मेरे मोलिक्यूल्स होते हैं, वो हम्म। मोलिक्यूल्स के बीच में जो हीट ट्रांसफर होता है, तो उस वजह से कंडक्शन होता है। और जो एयर, तुम मतलब लोहे को एयर या लोहे जो से मीडियम है काट बीच रहे हो, में, यू आर लिक्विड हो गया। सेइंग कि मॉलिक्यूल के बीच में हीट ट्रांसफर होता है, उसके वजह से हीट ट्रांसफर होता है। मैंने पूछा ही है कि हाउ डज द हीट एग्जैक्टली गेट ट्रांसमिटेड in solids through conduction. You are right, but how? Do we have conduction in gas? कंडक्शन इन दिस, नो सर। We don't have conduction in gas. Okay. Do we have conduction in liquids? नो सर, आई थिंक यस। Okay. Now, what is difference between gas and liquid? कि gas में हो नहीं होगा but liquid में होगा. एक गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो गए एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। Okay, fine. Here is a question for you. And you know everyone else. Okay, fine. So see, you are wrong here actually. Gases में भी conduction होता है. ठीक है. ओके, और लिक्विड में भी होगा? लिक्विड में भी होगा, सॉलिड में भी होगा. मैं पूछा कि कंडक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यू नो हाउ कंडक्शन हैपेंस. यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. नो सर, एक्चुअली ये बेसिक थिंग्स, मतलब तो डेफिनेशंस वगैरह मेरे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे क्वेश्चन पूछेंगे वो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो मेरा चल वही नहीं. क्वेश्चन था कि मैं इंटरव्यू को उस डायरेक्शन में कैसे डाइवर्ट कर सी पाऊँ। दैट्स एक्चुअली अ गुड अप्रोच, बिकॉज क्या होता है ना, मेजोरिटी जो इंटरव्यू है वो मोस्टली मोस्टली तुम्हारे जो वर्क एक्स है उस पे जाएगा. नाउ द पॉइंट हाँ। इज कि वी माइट आई माइट नॉट बी अवेयर ऑफ एग्जैक्टली व्हाट अ प्रोसेस इंजीनियर डू एंड ऑल दोस थिंग्स, तो बिकॉज ऑफ दैट मैं उस पे ओके, या ऑनेस्टली नहीं जा पाया. ठीक है. That is my limitation on हाँ from my हाँ। side. I totally accept that. But that being said, जो लोग वहाँ पे रहेंगे, obviously they are experienced, so they will be aware of what exactly you do. So that's a very good approach to have. ओके, जैसे मेरे इसरो के इंटरव्यू में they had तो मैं asked वही me मेरा from. क्वेश्चन था कि मैं इंटरव्यू, ओके, तो मैं इंटरव्यू हाँ. को उस डायरेक्शन में कैसे डाइवर्ट कर पाऊंगा कि वो मुझे मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे ही क्वेश्चन पूछे, See, मतलब जैसा point क्या कुछ होता है ना, it is a risky move to आपके। be honest. It is a risky move because you are there since 1 year and they people are working in chemical industry since maybe 20 years. So there could be a lot of information gap. ठीक है. They could ask you such a in-depth knowledge based question जिसके हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं इसरो इंटरव्यू में गया था एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वर्किंग इन ऑटोमोबाइल. तो दे आस्क मी ऑल ऑफ अ सडन हाउ दिस मटेरियल इज ओके, मेड, व्हाट काइंड ऑफ दिस मटेरियल इज मेड एंड हाउ विल यू मैन्युफैक्चर दिस, हाउ विल यू मैन्युफैक्चर दैट, एंड ऑब्वियसली आई कुडंट आंसर. तो although you can do that, don't over stress on your ओके, work ex. Okay. ठीक है। हाँ, मैं इसेंशियली व्हाट आई एम सेइंग इज कि इतनी रिस्क मत लो कि वो उसमें कूद जाएंगे पूरा. ठीक है. इफ यू थिंक दे माइट बी वही तो अवेयर मुझे ऑफ व्हाट थोड़ा यू बहुत, डू मुझे एटलीस्ट. बेसिक भी देखना पड़ेगा। थोड़ा बेसिक हाँ, तो देख लो, क्योंकि क्या है ना, देखो इसमें क्वेश्चन ज्यादा डेप्थ इन डेप्थ नहीं आते एचपीसीएल में, सो यू हैव टू गो थ्रू अ लिटिल बेसिक्स एज. ठीक है. ठीक है, गुड. चलो. सो आई स्टॉप योर इंटरव्यू हियर.